व्हेन यू से पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सब समझते हो, जिम्मेवारी, ठीक है। जिम्मेवारी आपको क्यों दी जाती है? आपकी क्वालिटी है और आपके जो टीचर्स हैं या सीनियर्स हैं या मैनेजमेंट वाले हैं वो विश्वास करते कि आप ये कर सकते हो। दैट मीन्स व्हेन यू आर गिवन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर मेड अ मॉनिटर, यू आर मेड अ हाउस कैप्टन, अ स्कूल कैप्टन, अ स्पोर्ट्स कैप्टन और टीम लीडर और व्हाटएवर, दैट मीन्स कि somebody has already acknowledged this particular quality in you, so which becomes a bonus. That means it has been already established by people who have been knowing you, under whom you are working, and obviously they've seen you over a period of time. Teachers have seen you over few months or maybe few years, and then they say नहीं यार ये लड़का जो है ये बहुत डिसिप्लिन्ड है, पंक्चुअल है, होशियार है और सबको लेके चल सकता है साथ में, इसी को हम स्कूल कैप्टन बना रहे। तो दैट इज इट्स अ कंफर्मेशन कि वो आप में क्वालिटी है। तो इस चीज को दिस कैन बी एट डिफरेंट लेवल्स, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एसएसबी में जब आप बात करते हो, डोंट टॉक अबाउट कि आई वाज द बेस्ट स्टूडेंट इन माय क्लास थर्ड, राइट। एनडीए के लिए, टीएस के लिए जा रहे हो, यू टॉक से फ्रॉम 8th ऑनवर्ड्स समथिंग, generally that is the thing asked of you, right? So tell me from 8th class onwards, nothing which has happened 10 years back, 10 साल में आप बहुत चेंज हो गए हो। तो वी वांटिंग टू सी कि आप अभी फिलहाल में आप क्या करते हो, what have been your achievements, what have been your habits, okay? So through all this we are trying to find out a pattern of your behavior, right? Now this pattern keeps changing from time to time. What you used to do 10 years back वो आज नहीं कर रहे हो, जितना मेहनत आप पहले करते थे शायद आज नहीं कर रहे हो, या फिर वाइस वर्सा, पहले आप बहुत मस्ती करते थे, नाउ यू सडनली रियलाइज कि यार I have to compete, I have to qualify somewhere, then you stop playing games or wasting time in other activities and then you focus, you become more serious, you start, तो आपकी habit change होगी। So something which is of recent time, right? More recent the better, okay? Try and cover those things which are of recent times, last 4, 5 years, 6 years, that's okay, ठीक है। जो ग्रेजुएट लेवल वाले हैं या सर्विस एंट्री वाले हैं, यू शुड टॉक, आपको पहले ही क्वेश्चन जो है विच विल स्टार्ट विद इज प्रेजेंटली व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट काइंड ऑफ ड्यूटीज यू आर इन्वॉल्व्ड इन, हाउ डिड यू गेट इनटू द सर्विस, राइट, वेयर आर यू वर्किंग, हु इज योर बॉस, हु आर योर कलीग्स, right? This is the same for all serving candidates. I'm not only talking about the armed forces, even if someone is working in a corporate or somewhere, right? The question starts from his job profile because that is the latest. जो भी आपने सब किया है उसका निचोड़ अभी है, दिखाई दे रहा है, okay? That is why something which is latest, we rely more on that rather than what you have done 10 years back. What you have done 10 years back also, maybe it has got something कि आपका कुछ ना कुछ पता लग रहा है कि आप में कुछ हुनर था, yes, but whether it still is there or not, right? So something which is more recent is desirable.